Hello friends, welcome to Let's Crack UPSC CSE. This is me Dr. Sidharth Arora and friends, we are continuing with our series Battle UPSC और इसके हमने दो वीडियोस कर लिए. सो 10 क्वेश्चंस के हम लोगों ने दो चंक्स कर लिए और एज आई टोल्ड यू कि ये बैटल लेवल है. बैटल लेवल का मतलब क्या होता है? बैटल लेवल का मतलब होता है वन, देयर इज अ टाइम कंस्ट्रेंट. सेकंड, दैट द क्वेश्चंस विल बी एक्चुअली योर एग्जाम सेंट्रिक लेवल. लेकिन क्या होता है, व्हाट मोस्ट पीपल मेक अ मिस्टेक अबाउट इट is that they start covering 10,000 MCQs. Okay, आपको मार्केट में मिलेगा 500 MCQs, 1000 MCQs, PDFs भरे हुए. It won't help you. Why? Because you don't know how to approach these questions. So मैं तुम्हें सिखाऊंगा how to approach these questions in a time constrained manner. Also giving you exam centric preparation, but तुम्हें elimination आना चाहिए, तुम्हें intelligent guessing आना चाहिए. You should know कौन सा subject कितना deep पढ़ना है and so on and so forth. So in that context, I am welcoming you to the series और this way we will continue. So 20 parts की ये सीरीज होगी. अभी तक 2 पार्ट्स हुए. हर पार्ट में 10-10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बट एक्चुअली देखा जाए तो एवरी क्वेश्चन इज वर्थ 4 times its number. Why? Because we will take care of all the 4 choices also. So make sure that you take full advantage of the series. And this is me, Dr. Sidharth Arora. Unacademy की दुनिया में मुझे सेट लाइव SIDLIVE सेट लाइव कोड के नाम से जाना जाता है. सेट लाइव कोड का फ़ायदा होगा अगर तुम अनअकैडमी के प्रोफाइल पे मेरे जाओगे तो तुमको अलग अलग कोर्सेज दिखाई देंगे. एक तरह का कोर्स होगा विच इज़ कॉल्ड कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिटी. अब ऐसा अलग अलग नाम से भी मिल सकता है, बट है इट इज़ पॉलिटी. पॉलिटी कॉम्प्रिहेंसिव मीन्स A to Z. ईस्ट इंडिया कंपनी कब से इंडिया आई से लेकर ऑल द वे टिल कंटेम्प्रेरी इशूज़ मैंने इसमें डील किया हुआ है और मैंने चैम्पियंस क्रिएट किए हुए. सो पीपल हैव बीन स्टिल कमेंटिंग कि सर कैसे इतना टफ सब्जेक्ट को आपने इतना सिंप्लीफाई कर दिया. द रीज़न टू दैट इज बिकॉज आई हैव टॉट यू राइट फ्रॉम फाउंडेशन ऑल द वे टू द एडवांस टॉपिक्स. सेकेंड टाइप को कोर्सेज मिलेंगे विच आर कॉल्ड कॉम्प्रिहेंसिव गवर्नेंस. फिर से जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नेंस से लेकर वेलफेयर स्कीम, कंटेम्प्रेरी इशूज, करंट अफेयर्स, आई हैव डेल्ट विद ऑल ऑफ देम इन ह्यूज डिटेल. थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चंस और थर्ड टाइप ऑफ कोर्स इज द कंप्लीट इंटरनेशनल रिलेशंस. कंप्लीट इंटरनेशनल रिलेशन में इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स, इंडिया चाइना, इंडिया पाकिस्तान, नॉन अलाइन मूवमेंट, वर्ल्ड बॉडीज, एवरीथिंग आई हैव टेकन केयर ऑफ. देन मैं लेकर आया हूँ व्हाट इज कॉल्ड एज कॉम्प्रिहेंसिव PSI ऑप्शनल. कॉम्प्रिहेंसिव PSI ऑप्शनल उन लोगों के लिए है जिन्होंने ऑप्शनल के लिए पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन ढूंढा है. तुम एक बार इन क्लासेस को अटेंड करोगे ना, तब तुम्हें रियलाइज होगा कि व्हाट इज कॉल्ड 24 कैरेट रॉक सॉलिड प्रिपरेशन. You will realize कि कितना in depth पढ़ाया गया है. So much so that even those who are graduates and post graduates in pol science, जिन्होंने कई साल ये सब्जेक्ट पढ़ा है, उनको भी लगता है कि वाओ 2-2.5 साल में कितना डीप, 2-2.5 घंटे में उतना पढ़ा दिया जाता है जितना 2-2.5 साल में नहीं पढ़ाया जाता. सो मेक श्योर दैट यू टेक एडवांटेज एंड ऑल ऑफ दिस में मैंने इंटेंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड आंसर राइटिंग सेशंस को इंक्लूड कर लिया. सो All you have to remember is the code SIDLIVE SIDLIVE. फिर चाहे तुम प्लस क्लासेस लो, चाहे आइकॉनिक क्लासेस लो, आपको इमीडिएट 10% डिस्काउंट मिलेगा. एज इट इज अनअकैडमी हैज़ केप्ट द प्राइसेस वेरी वेरी रीजनेबल. उसमें भी जब तुम कोड यूज़ करते हो SIDLIVE SIDLIVE तो तुम्हें और 10% डिस्काउंट मिल जाएगा. डोंट लेट गो ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी. दोज ऑफ यू who want to study for GS as well as optional, मैं अभी भी सजेस्ट कर रहा हूँ, make sure that you take a combination course. Take a combination course either for 24 month or 36 month course और तुम नोटिस करो कितना मनी सेव हो जाता है. All you have to remember is the code SIDLIVE. Unacademy has also brought for you what is called as a last mile program, which is an interview guidance program. और ये जब तुम सारे कोर्सेस में से डिपेंडिंग अपॉन के कौन सी स्टेज ऑफ प्रिपरेशन पे तुम लोगे, तब तुम्हें रियलाइज होगा कि व्हाट इज 24 कैरेट रॉक सॉलिड प्रिपरेशन. ऐसे बैठे बैठे सपने दिखाने से कोई सिविल सर्विस एग्जामिनेशन क्रैक नहीं करता. टेक एडवांटेज. एक बार उन सब स्टूडेंट से पूछो जिन लोगों ने मेरे ये इन कोर्सेज को लिया है और उसका एडवांटेज उठाया है. दे आर टुडे फार 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 बेटर प्रिपेयर्ड टू क्रैक दिस एग्जाम दैन एनी टाइम सून. सो यूज द कोड SIDLIVE, तुम्हें नीचे दिख रहा होगा SIDLIVE, एंड गेट एन इमीडिएट 10% डिस्काउंट. And make sure that you give yourself a realistic chance of passing this exam. So, एक important suggestion है. I don't know when you are looking at this video, but if you're watching this video before 28th April, तो तुम्हारे पास एक golden chance है.
इफ यू टेक द अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन बिफोर 28 अप्रैल तो आपको सिर्फ 10% डिस्काउंट, द बेस्ट ऑफ द एजुकेटर्स ही नहीं मिलेंगे. यू विल ऑल्सो गेट 20 बुक्स विच हैव बीन क्रिएटेड बाय द बेस्ट ऑफ द यूपीएससी एक्सपर्ट्स, जिसमें सारा सिलेबस कंप्लीट होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, करंट अफेयर्स होंगे, एवरीथिंग विल बी इंक्लूसिव ऑफ दैट एंड ऑल ऑफ देम फ्री ऑफ कॉस्ट, होम डिलीवर्ड टू योर प्लेस. सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप 28 अप्रैल से पहले ले लो. और इसका एक और फ़ायदा है, अगर आपने 28 अप्रैल से पहले ये कोर्स ले लिया तो 1 ईयर प्लान के साथ, ओके, यू विल नॉट गेट 1 ईयर का कोर्स, यू विल गेट एन एक्सटेंशन कोर्स. यानी कि आपने 1 साल का कोर्स लिया लेकिन इट विल बी वैलिड ऑल द वे टिल प्रीलिम्स ऑफ 2022. तो हो सकता है प्रीलिम्स कुछ और समय बाद हो, डोंट वरी, अनअकैडमी तुम्हारा लास्ट डे तक साथ निभाएगा. सिमिलरली 2 ईयर का प्लान विल बी वैलिड नॉट ओनली फॉर 2 years बट टिल प्रीलिम्स ऑफ 2023. तो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि तुम्हारी एग्जाम हो और तुम्हारे पास कोई अनअकैडमी का साथ ना हो. सो ऑल यू हैव टू रिमेंबर इज द कोर्स सेड लाइव एंड द डेट दैट यू हैव टू रिमेंबर इज 28 अप्रैल. चाहे फिर वो फ्री टेस्ट सीरीज हो, चाहे बैच कोर्सेस हो, ऑल द टाइम मेक श्योर दैट यू टेक एडवांटेज. तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं 10 क्वेश्चंस जो आज की सीरीज है और आज का पार्ट है 21 से लेकर. तो तुमने नोटिस कर लिया क्वेश्चन 21 से स्टार्ट कर रहा हूँ, यानी कि क्वेश्चन 20 तक हो चुके. अब 20 क्वेश्चंस के लिए तुम्हें सब रिवाइज कर लेना चाहिए. मेक श्योर जिस तरह से मैंने उसको समझाया यू टेक फुल एडवांटेज. अब क्वेश्चन 21 स्टार्ट हो रहा है. 60 सेकेंड्स तुम्हें पढ़ने के लिए मिलेगा, 60 सेकेंड्स टू एनालाइज, और तुम आंसर दे सकते हो. अब आंसर देंगे, 2 चॉइसेस है, या तो तुम ये लाइव कमेंट्स में आंसर दो या फिर राइट इट इन योर नोटबुक. आइदर वेज मुझे कोई नहीं फर्क पड़ता. यू मस्ट नोट डाउन वाई इट वॉज राइट, वाई इट वॉज रॉन्ग. इफ इट इज राइट देन कंसोलिडेट ऑन योर नॉलेज, इफ इट इज रॉन्ग मेक श्योर दैट यू स्टडी. और अगर तुम्हें खुद से नहीं हो रहा है, डोंट वेस्ट अ सिंगल मोर मोमेंट, मेक श्योर दैट यू जॉइन माई प्लस क्लासेस. ऑल यू हैव टू रिमेंबर इज द कोड सेट लाइव. सो शुरुआत करते हैं राइट विथ क्वेश्चन नंबर 21. I wish you all the best. Take your time and start. Right to vote and to be elected in India is a A. Fundamental right, B. Natural right, C. Constitutional right, D. Legal right. तो मैं थोड़ा, तुम लोगों को बैटल लेवल है ना, तो मैं थोड़ा सा तुमको ऐसा बैटल लेवल म्यूजिक के एनवायरनमेंट में डालना चाहता हूँ. तो म्यूजिक खत्म, टाइम खत्म. यू हैव टू थिंक, बट बैटल लेवल रखना बड़ा जरूरी होता है. कम ऑन. राइट टू वोट एंड टू बी इलेक्टेड इन इंडिया इज अ इनमें से बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है. कम ऑन, अभी टाइम बाकी है. Couple of seconds more. Concentrate. All right. So the answer for this is very simple. No जी, it's not at all simple. Because actually जब UPSC ने ये क्वेश्चन पूछा था तो it was way back in 2016. So तब ये क्वेश्चन का आंसर आ गया था, it is a constitutional right. फॉर वट एवर फनी रीज़न उस टाइम पर इसको एक्सेप्ट भी कर लिया गया था. इनफैक्ट UPSC CSE का आंसर की में भी इसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट माना गया था. बट इन 2018, इनफैक्ट 2018-2019 में
जस्टिस DN पटेल दिल्ली हाई कोर्ट की एक जजमेंट आई है जिसमें ये बात बोला गया राइट टू वोट इज नॉट एट ऑल अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, इन फैक्ट इट इज़ अ लीगल राइट। और अगर सही बताया जाए तो अगर दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट उठा ली जाए तो उसमें स्पेसिफिकली जो बोला गया वो ये बात बोला गया इट इज़ नॉट इवन अ राइट, इट इज़ अ मेथड ऑफ प्रोसीजर। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, तो अगर तुम्हें याद रखने का तरीका है तो इसे ऐसे बोला जाता है दैट राइट टू वोट हु कैन बी एन इलेक्टर, you can elect if you section 62 of the ROP Act, that is Representation People's Act allows, minus the exception of section 16 of ROP Act। यानी कि ये रूल्स की बात है, इट यू कैन बी स्टॉप्ड फ्रॉम वैरायटी ऑफ वेज। और अगर तुम्हें याद है तो इफ यू नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, यू हैव डन सम करप्ट प्रैक्टिसेस एटसेट्रा, यू डोंट हैव अ राइट टू वोट। इनफैक्ट ये पिटिशन इसलिए उठाई गई थी और rather फाइल की गई थी in order to, so it was actually alleged or rather agitated that prisoners को जो आप right to vote नहीं देते, ये उनको fundamental right या फिर constitutional right violate हो रहा है। And Justice DN Patel's judgment, who was the then Chief Justice of Delhi High Court, in fact the present Chief Justice also, right, of Delhi High Court, उनका specific order था that there is nothing called as violation because it is not a constitutional right। So actually उस time पर I think it is was a relevant thought of civil services examination, in fact उनके आंसर की का पार्ट भी था बट नो लॉन्गर। सो मैंने दोनों ही को मार्क कर दिया। अगर तुमने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिया तो इसका मतलब तुमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़े हुए, और अगर तुमने नहीं किया हुआ है तो यू शुड बी नोइंग दैट इट इज नाउ अ लीगल राइट एंड यू शुड बी फॉलोइंग इट इन दैट वे। सो लेट अस लुक एट द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 22 कमिंग योर वे। ऑलराइट, सो alright, which of the following are envisaged by the right against exploitation in the Constitution of India? Which of the following are envisaged by the right against exploitation in the Constitution of India? 1. Prohibition of traffic in human beings and forced labor. 2. Abolition of untouchability. 3. Protection of the interests of minorities. 4. Prohibition of employment of children in factories and mines. Select the correct answer using the code given below. 1, 2 and 4 only, 2, 3 and 4 only, 1 and 4, 1, 2, 3 and 4। एक बार ध्यान से वर्ड देख लो। Which of the following are envisaged by the right against exploitation? And your time starts now। म्यूजिक खत्म, टाइम खत्म। Which of the following are envisaged by right against exploitation? Still of time, एक एक चॉइस को एलिमिनेट करो। Still have about 20 more seconds। केयरफुली, मल्टीपल चॉइसेस आती है, हमेशा कंफ्यूजिंग होता है। ऑलराइट, सो आंसर ऑब्वियसली वेरी सिंपल अगर तुम्हें ये टॉपिक आता है। सो देयर आर टू आर्टिकल्स, वन इज आर्टिकल 23 विच इज डीलिंग विद प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर। तो आपको बेगार सिस्टम, प्रोस्टिट्यूशन, फोर्स प्रोस्टिट्यूशन, देवदासी सिस्टम, इमोरल ट्रैफिकिंग, ये सब आपको दिख जाएगा आर्टिकल 23 में एज बीइंग प्रोहिबिटेड। उसी तरह से आर्टिकल 24 इज प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एंड माइंस एटसेट्रा। माइनॉरिटीज के लिए आर्टिकल 29 एंड 30 है, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी के लिए आर्टिकल 17 है। तो चाहे तुम एलिमिनेशन से करो तो भी तुम्हें आंसर आ जाएगा, और अगर तुम एब्सोल्युटली स्ट्रेट फॉरवर्ड कर लोगे तो भी तुम्हें आंसर आ जाएगा।
point that you remember is Article 23 and Article 24 are fundamental rights. But these fundamental rights are of no use. They are of no use until and unless you have some parliamentary statutory law. Now, let me explain this to you. So, for example, you have Article 23. Now, you say prohibition of trafficking in human beings and forced labor. But इसको enforce कैसे करोगे? इसको enforce करोगे by making a parliamentary law. For example, the Immoral Trafficking Prohibition and Prevention Act. उसी तरह से prohibition of employment of children. इसको कैसे enforce करोगे? Again using a parliamentary law like the CLPR, the Child Labor Prohibition and Regulation Act of 1986. So these are two constitutional articles. In fact, there are three such things. That is abolition of untouchability also. Article 17 can also be enforced only and only if you have a parliamentary law, which in this case is Protection of Civil Rights Act of 1955, or for that matter the Scheduled Caste and Scheduled Tribe Prevention of Atrocities Act of 1989. So these are 2-3 points जो आपको एक साथ इसमें से मिल जाएंगे. Make sure that you remember all the fundamental rights and the subdivision of them. Right against exploitation में दो articles, Article 23 and Article 24, which is choice number 1 and choice number 4. I hope the point is clear और अब तुम्हें मालूम पड़ गया कि actually polity पढ़ते कैसे. Let's go to the next question. Question number 23 coming your way. One of the implications of equality in the society is the absence of. मैं फिर पढ़ रहा हूँ. One of the implications of equality in society is the absence of A. Privileges, B. Restraints, C. Competition, D. Ideology. Time starts. Music खत्म, time खत्म. Go on. One of the implications of equality in the society is the absence of. ये अगर तुमने NCERT भी पढ़ा होगा तो भी तुम्हें आंसर आ जाएगा. बैटल लेवल है, मतलब बैकग्राउंड म्यूजिक भी बैटल लेवल है. Still have about 20 more seconds. Alright. Both is commonly asked questions and NCERT से निकाला हुआ एक क्वेश्चन है एक्चुअली जो ऑलरेडी सिविल सर्विसेज में आया हुआ है. वन ऑफ द इम्प्लीकेशन ऑफ इक्वालिटी इज द एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस. रिस्ट्रेंट्स हमारे यहाँ पे अलाउड है, वो रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शंस होना चाहिए. ओके, सो रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रेंट्स या रिस्ट्रेनेबल ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शंस इज अलाउड. कंपटीशन इनफैक्ट हम प्रमोट करते हैं, राइट. सो वी वांट पीपल टू कम्पीट. आइडियोलॉजी के तो उल्टा हमारे पास फंडामेंटल राइट्स है. सो द इनफैक्ट प्रीएम्बल में भी लिखा हुआ है लिबर्टी ऑफ बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप. तो हम तो उल्टा प्रमोट करते हैं कि करो. प्रिविलेजेस वी कैन नॉट अलाउ. सो if there are two people who are at equal things, so A is equal to E, so A is equal to A in all aspects. अब आप एक को extra VIP treatment दे रहे हो, this is certainly not allowed. So please remember privileges are not allowed, but इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं होता that equality का मतलब हो जाए that equal treatment, certainly not. Like must be treated like, unlike must not be treated like. So this is a very beautiful funda. तो जब मैं क्लास में पढ़ाता हूँ तो मैं एक वो वॉल वाला स्ट्रक्चर बनाता हूँ, तो जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको बड़े अच्छे से याद आ गया होगा. इक्वालिटी इन इंडिया is can be defined into 3 words, or rather by 3 words. That is called level playing field. It is the level playing field. तो हम इक्वालिटी का मतलब इक्वल ट्रीटमेंट नहीं होता.
इक्वालिटी का मतलब होता है टू रीच इक्वालिटी। सो ये बड़ा ही प्यारा और बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन एक साथ ही है। इसी के बेसिस पर रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट है, इसी के बेसिस पर स्पेशल लॉज है फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। प्लीज रिमेंबर दिस इज इक्वालिटी। वेरी गुड क्वेश्चन, actually straight from NCERT. And let's go to question number 24. Which principle among the following was added to the directive principles of the state policy by 42nd amendment to the constitution? Which principle among the following was added to the directive principles of state policy by the 42nd amendment to the constitution? A. Equal pay for equal work for both men and women. B. Participation of workers in the management of industries. C. Right to work, education and public assistance. D. Securing living wage and human conditions of work to the workers. समय स्टार्ट म्यूजिक के साथ, म्यूजिक खत्म, टाइम खत्म। कम ऑन। इसका बेटर तरीका ये है कि जो जो लिखा हुआ है उसके आर्टिकल्स लिखते चले जाओ, देन इट विल बी इजी फॉर यू टू रिमेंबर। सो फर्स्ट डू द फर्स्ट पार्ट, क्विकली राइट डाउन इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, कौन सा आर्टिकल एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ, देन विल बी इजी फॉर यू टू राइट। You still have about 20 more seconds. Come on. 42nd Amendment 1976, the mini Constitution of India. Now it was a very simple way of approaching this. Okay, see, सबसे पहले you can actually understand कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से, तो सबको मालूम है आर्टिकल इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मेन एंड वेमेन, ये आर्टिकल 39 सब क्लॉज बी सी कॉन्सेप्ट्स में से आ जाता है। राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, राइट टू पब्लिक असिस्टेंस एक्सेट्रा आर्टिकल 41 का कॉन्सेप्ट है। सिक्योरिंग लिविंग वेजेस एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क आर्टिकल 43 का कॉन्सेप्ट है। ये ऑटोमेटिकली आ जाता है। अगर आप ऐसे भी देखोगे तो पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज आर्टिकल 43 कैपिटल ए है। कैपिटल ए मतलब अमेंडमेंट से आया हुआ है। सो दिस इज वन वे ऑफ रिमेंबरिंग दिस। अब इसका उल्टा तरीका भी है कि यू माइट एज वेल टेक 42nd अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, उसको याद रख लो। ओके, दैट्स वन ऑफ द वेज। सो आप एक्चुअली आर्टिकल 39 कैपिटल ए दैट इज फ्री लीगल एड से ले लो। ओके, सो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम दिस आर्टिकल 39 सब क्लॉज एफ, आर्टिकल 39 कैपिटल ए, सो दिस इज वन। Then the participation of workers in the management of industries, that is article 43A and 48A, which was dealing with environment. तो चार articles और चार principles, directive principles of state policy से इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने 42nd अमेंडमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन डाला था। अब या तो इस तरह से याद रख लो या फिर द बेटर वे इज दैट यू एलिमिनेट। इसको करने का एक ही तरीका है दैट जो भी प्रिंसिपल्स लिखे उसके आगे उसको आर्टिकल नंबर डाल दो। That is the only way of remembering, otherwise very difficult to remember the principles. Let's go to the next question now. Question number 25. Which one of the following statements is correct? Pay attention to the word correct पूछा गया। A. Rights are claims of the state against the citizen. B. Rights are privileges which are incorporated in the constitution of a state. C. Rights are claims of the citizens against the state. 4. Or D. Rights are privileges of a few citizens against the many. सोचने वाली बात है, इसलिए सोचो by the time the music has started. Read the words and convert them into your thinking language. That's the only way you'll be able to get
the answer. Come on, come on, come on. एक एक वर्ड को पढ़ो और अपनी लैंग्वेज में उसको डालो. Still around 20 more seconds. ग्रेट. अब सबसे इसका तरीका क्या था कि कुछ बेसिक चीज़ें तो हटाई जा सकती थी. मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, तो प्रिविलेजेस तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अलाउड ही नहीं है, तो प्रिविलेजेस तो ऐसे ही वर्ड हटा दिया जाएगा. दूसरी बात है, राइट्स इंडिविजुअल्स के होते, स्टेट के राइट्स नहीं होते. सो अगर आपने ये लिखा राइट्स आर क्लेम्स ऑफ द स्टेट अगेंस्ट द सिटीजन, ये कहानी उल्टी हो जाती है. दिस सर्टनली कैन बी वेरी इजीली एलिमिनेटेड. फिर से एक और बार वर्ड आया, राइट्स आर प्रिविलेजेस ऑफ अ फ्यू सिटीजन्स. तो अगर तुमने इक्वालिटी वाले कॉन्सेप्ट ही देख लिया होगा तो तुम इन दो चॉइसेस को एब्सोल्युटली रिजेक्ट कर सकते हो. ये एट्रोशियसली रॉन्ग है, ये बच गया है यहाँ पर. और वैसे भी अगर तुम्हें थॉमस जेफरसन की स्टेटमेंट याद है, तो जब यूनाइटेड स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो थॉमस जेफरसन वाज नॉट वेरी हैप्पी बिकॉज ही सेड दैट दिस इज अ वेरी स्ट्रेंज कॉन्स्टिट्यूशन which is telling the government what it can do, but it is not telling the government what it cannot do. In other words, there has to be a limitation. इसी क्वेश्चन से एक और क्वेश्चन बन सकता है, what is a constitutional government? A constitutional government is a limited government. फिर एक और क्वेश्चन बन सकता है कि what is the role of the constitution? A constitution government or the constitution is important to limit the government, else the government will become despotic, it will become unlimited, and there is nothing called as unlimited government in a democratic or a civilized nation. तो एक ही लाइन से कितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं. पढ़ने वाला होना चाहिए, पढ़ाने वाला होना चाहिए. राइट्स आर क्लेम्स ऑफ द सिटीजंस अगेंस्ट द स्टेट, बट दैट डज नॉट ऑटोमेटिकली मीन दैट राइट्स आर नॉट द सिटीजंस क्लेम्स अगेंस्ट अनदर ऑल सिटीजन. तो राइट्स कैन बी अगेंस्ट द स्टेट ऑल्सो, राइट्स कैन बी अगेंस्ट एन इंडिविजुअल ऑल्सो. लेकिन व्हाट आर फंडामेंटल राइट्स? फंडामेंटल राइट्स आर दोज राइट्स व्हिच आर क्लेम्ड बाय द सिटीजंस अगेंस्ट द स्टेट. तो मेरे ख्याल से जब यूपीएससी पूछने की कोशिश कर रहा है तो आमतौर पर वो फंडामेंटल राइट्स के बेसिस पे पूछ रहे होंगे. But either ways, you should know the complete definition. Let's go to question number 26. Consider the following statements. With reference to the Constitution of India, the directive principles of state policy constitute limitations upon 1. Legislative function, 2. Executive function. Which of the above statements is or are correct? 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2. Music start करता हूँ because question confusing है. ध्यान से, मैं तुम्हें हिंट ये दे देता हूँ कि यहाँ पे पूछा गया विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. About 20 more seconds left. फटाफट आंसर दो, बट मेक श्योर दैट एक्यूरेसी का पॉइंट्स होने चाहिए. याद रखना, जल्दी के मार्क्स नहीं है, करेक्ट आंसर के मार्क्स है.
ग्रेट. अब एक्चुअली इसका आंसर is I'm sorry, this is not the correct answer. Okay, इसका आंसर is legislative function. I'm sorry, this is not the correct answer. So correct answer is one only, right? Now the situation here is कि इसमें, so don't take this, okay? So don't take accept this as an answer. अब इसमें चक्कर क्या है, that there is a small problem here. अब अगर मैं इस क्वेश्चन को इस तरह से पढ़ूंगा, okay? So directive principles of state policy constitute limitations upon. अब इसके अलग अलग आंसर्स हो सकते हैं. सी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या लेजिस्लेटिव फंक्शन के ऊपर लिमिटेशंस डालता है? यस. बट अगर उसके साथ साथ में ये चले जाए कि एक तरह से लाइन दैट द एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ द स्टेट एक्सटेंड्स टिल दैट प्लेस विद द लेजिस्लेटिव फंक्शन एक्सटेंड्स, तो इन अ वे तो ये भी आंसर करेक्ट हो जाता है, तो बोथ 1 and 2 आ जाता है. But then that is the hint with reference to the Constitution of India, because अगर आर्टिकल 37 पढ़ा जाए तो उसमें लिखा है that the principles contained in this part shall not be enforceable by any court, but it shall be the duty of the state to follow these principles while passing laws. तो laws के लिए वर्ड यूज किया है in the Constitution of India. So you have to be very very careful. इसलिए मैंने तुम्हें हिंट दिया था विद रेफरेंस टू कॉन्स्टिट्यूशन पूछा गया था. क्वेश्चन नंबर 27 कमिंग योर वे. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ एन इंडियन सिटीजन? 1. A legislative process has been provided to enforce these duties. 2. They are correlative to legal duties. Select the correct answer using the code given below. 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2. थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ कि तुम्हें ये आंसर तभी आंसर आएगा जब मिनर्वा मिल्स केस याद आएगा. कम ऑन, म्यूजिक खत्म, टाइम खत्म. Twenty more seconds. Fundamental duties. See, when you look at fundamental duties, it was dealt by in the Minerva Mills case also at that time. Okay, please remember that it is not justiciable. Fundamental duties are not justiciable. They are not enforceable through the courts of law. Also very important, they don't have any legal duties की correlative होगा तो ये legal duties का automatically मतलब फिर से वही वाली बात है जो point number 1 में लिखी हुई है, that there has to be a legislative process to enforce these duties. Actually जो 1 and 2 है, they are practically the same thing, synonymous with one another. और अगर 1 wrong है तो obviously second वाला wrong है. So these are some funny questions. वो एक ही चीज़ को legal duties का actually concept ही है that legal duties are those duties in which a legislative process have been provided to enforce these duties. जब पहला वाला choice wrong है तो automatically second choice wrong है. तो पढ़ने वाला होना चाहिए, दैट लैंग्वेज को डिसाइफर करने वाला होना चाहिए. यू विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन, वरना तुम इसमें जरूर गेस वर्क में गलत करोगे. लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 28. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन राइट्स एंड ड्यूटीज? करीब करीब रिलेशन लग रहा है, देखते हैं ये क्वेश्चन अलग है कि सेम है. राइट्स आर कोरिलेटिव विद ड्यूटीज. बी, राइट्स आर पर्सनल, हेंस इंडिपेंडेंट ऑफ सोसाइटीज एंड ड्यूटीज.
C. Rights, not duties, are important for advancement of the personality of the citizen. Duties, not rights, are important for stability of the state. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और सिर्फ दिमाग लगाने की बात है. आई थिंक एनसीईआरटी पढ़े हुए लोगों को भी ये आ जाएगा. Read every line, convert it from English language to your thinking language, and then answer this question. Come on, you still have about 20 more seconds. I think basic civics और basic polity से भी तुम्हें ये line आ जाएगी. That the correct relationship between rights and duties are सी मिनर्वा मिल्स केस की जजमेंट थी व्हेन जस्टिस चंद्रचूड़ के सामने ये रखा गया था. कोर्ट विद सीज विद दिस प्लान कि आर राइट्स एंड ड्यूटीज गोइंग टू बी एब्सोल्युटली टू डिफरेंट साइलोज और टू डिफरेंट कैन बी हेल्ड अंडरस्टूड इन वैक्यूम. सर्टेनली नॉट. राइट्स आर कोरिलेटिव विद ड्यूटीज. When I say rights are personal, hence independent of societies and duties, I think it is atrocious. अब अगर इसको उल्टा बनाया जाए तो rights and not duties are important for advancement of personality of the citizen. I think it is absolutely fundamental duties के लिए जब स्वर्ण सिंह कमेटी बनाई गई थी तो स्वर्ण सिंह कमेटी ने भी बोला था that there should be a reminder to the citizens. So ये उल्टा भी ठीक नहीं है. The duties not rights are important for the stability of the state because rights themselves are what is called as very crucial component of human existence. तो दोनों ये C और D atrociously wrong हो जाते हैं, B भी completely atrociously wrong हो जाते हैं. Frankly speaking, अगर आप प्योर इसको civic sense में भी देखोगे तो rights are correlative with duties. मिनर्वा मिल्स केस जजमेंट नहीं भी आता तो you can use common sense. Question number 29 and let's go with the points. Consider the following statements. In the election for Lok Sabha or State Assembly, the winning candidate must get at least 50% of the votes polled to be declared elected. 2. According to the provisions laid down in the Constitution of India in Lok Sabha, the Speaker's post goes to the majority party and the Deputy Speakers to the opposition. Which of the statements given above is are correct? 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2. Your time starts now. Focus on every word. वर्ड्स पे ध्यान रखना. अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. अपनी मर्जी का नहीं बताना है. Five more seconds. अगर तुम्हें पहली चॉइस के बारे में पता है तो इन द इलेक्शंस फॉर लोकसभा और स्टेट असेंबली विनिंग कैंडिडेट को 50% वोट्स की बात नहीं है. ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ना ये कोटा सिस्टम होता है.
हमारे यहाँ पर जो मेथड ऑफ इलेक्शन होता है उसे बोलते हैं फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, मतलब जिसको मैक्सिमम आ गया वो जीत गया, चाहे वो एक वोट से ही क्यों ना जीता हो, चाहे उन सब लोगों के 10% वोट हो और एक का 10.1% होगा, वो जीत जाएगा। दूसरी बात है, ये जो लिखा हुआ है स्पीकर्स पोस्ट गोज टू मेजोरिटी पार्टी एंड डेप्यूटी स्पीकर्स टू द ऑपोजिशन, ये कहीं नहीं लिखा हुआ। इट इज जस्ट द कन्वेंशन, वो भी डेप्यूटी स्पीकर टू द ऑपोजिशन, वो केवल एक कन्वेंशन है। स्पीकर्स पोस्ट हो चाहे डेप्यूटी स्पीकर्स हो, वो एक ओपन इलेक्शंस होगा इन द लोकसभा। अब क्योंकि मेजोरिटी पार्टी के पास ज़्यादा मेंबर्स है इन द लोकसभा, ऑटोमेटिकली स्पीकर की पोस्ट जाएगी मेजोरिटी पार्टी के पास। हैविंग सेड सो, आर्टिकल 93 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी वेरी क्लियर अबाउट इट, that the speaker and the deputy speaker, or rather the house of the people, as soon as possible, the word is as soon as possible, must elect a speaker and if required a deputy speaker. That's it, as soon as possible. कहीं नहीं लिखा हुआ कि किसको पास जाना चाहिए, whether it's the majority party or deputy speaker to the opposition. So please remember, that is why I was clarifying, according to the provisions laid down in the Constitution of India, choice automatically goes wrong. This brings us to the last question of this part. Which of the following are not necessarily the consequences of proclamation of president's rule in a state? 1. Dissolution of the state legislative assembly. 2. Removal of the council of ministers in the state. 3. Dissolution of the local body. Select the correct answer using the code given below. 1 and 2 only, 1 and 3 only, 2 and 3 only, 1, 2 and 3. दिमाग से आंसर देना not पूछा है. Time starts now. Come on, focus, focus. Not पूछा है. About 20 more seconds to go. Last 10 seconds. See, you have to look at when not to, you should know how to eliminate things. This is very very important. So अगर आप ये देखोगे तो डिसोल्यूशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, अब तुम लोगों सर ये कैसे नहीं हुआ, ओके, और हाउ डिड यू नॉट गेट दिस आंसर करेक्ट? बेटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट थी एंड दैट वाज एसआर बोमे केस, इसमें ये बात बोला गया था दैट स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व कंपल्सरी नहीं किया जाता, सस्पेंशन भी किया जा सकता है. सो दिस इज नॉट नेसेसरली पूछा गया. येस, बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर इज दैट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज सर्टेनली रिमूव्ड. लोकल बॉडीज का प्रेसिडेंट रूल से कोई लेना देना नहीं है. सो व्हाट इज नॉट नेसेसरली इन्फ्लुएंस इज 1 and 3 only. The executive can be taken away, that is acceptable, but dissolution is not automatic. In fact, अगर आप एसआर बोमे जजमेंट के 10 डायरेक्शंस पढ़ोगे तो उसमें क्लियरली बोला हुआ है दैट टिल द टाइम प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन इज नॉट रैटिफाइड बाय द पार्लियामेंट इट शुड नॉट बी डिसॉल्व्ड, एट मैक्सिमम इट शुड बी सस्पेंडेड. सो वेरी ब्यूटिफुल क्वेश्चन, और इसके लिए तुम्हें इन डेप्थ नॉलेज आनी चाहिए एंड दैट इज व्हाट आई ऑलवेज टेल यू कि अगर आपको सही मायने में 24 कैरेट प्रिपरेशन करनी है तो प्लीज मेक श्योर दैट यू जॉइन अस. डोंट अननेसेसरली वेस्ट योर टाइम. अपने आप से बैठे तुम्हें वो नुएंसेस नहीं समझ में आएगा. यूपीएससी इज नॉट एन एग्जाम विच इज रिक्वायर्ड फॉर और विच कैन बी डन विद सेल्फ स्टडी. तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कहाँ पर वो ट्रैप्स है, एंड दिस इज वाई माई स्टूडेंट्स आर एबल टू नाउ क्रैक द टफेस्ट ऑफ द एग्जाम्स. सो मेक श्योर दैट यू डोंट टेक अननेसेसरली रिस्क विद योर करियर. Take a wise decision, but take that wise decision now. In the words of Unacademy, let's crack it. Until next time, God bless, thank you, and Jai Hind. I will join with you
with the fourth part of this series of battle level MCQs. Thank you and God bless.